आज मैं YouTube के फेमस डेस्क लैम्प को रिक्रिएट करूंगा और वो है ये विंडमिल डेस्क लैम्प। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे सिर्फ सिंपल मटेरियल में घर पे कैसे बना सकते हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज संकेत और आप देख रहे हो CopyDIY। यहाँ मैं YouTube के अच्छे DIY प्रोजेक्ट्स को खुद बनाता हूँ। सो इस प्रोजेक्ट्स के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, हमें सॉलिड कॉपर वायर चाहिए 1 mm डायमीटर का, 5 मीटर ले सकते हैं आप। एक N20 मोटर, 2 बैटरी ले सकते हैं 1860-50 का जो मैंने लिया है, और एक मोटर स्पीड कंट्रोलर 5 एम्पियर का या 2 एम्पियर का भी चलेगा, और एक चार्जिंग मॉड्यूल TP4056 और एक बेस इसके लिए। और ये बेस मैंने MDF का लिया है, 3 mm का है ये बेस, MDF बोर्ड। तो चलिए देखते हैं इसकी मेकिंग। गाइस मैं 2 प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। एक है हमारा कॉपर पाइप 4 mm का और दूसरा है स्ट्रिंग राइस लाइट। और ये सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइस मेरे को एक दिक्कत आ रही थी, मैं N20 मोटर पे कॉपर वायर सोल्डिंग कर पा रहा था।
तो मैंने उसको पेपर टेप से ही उसको टेपिंग कर दिया है और उससे बस 2 लेयर बना दिया है। अंदर वाला लेयर माइनस में रहेगा N20 का और ऊपर वाला जो लेयर है लाइट के लिए वो प्लस में रहेगा, कॉपर पाइप वाला।